अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, कोकोनट राइस। उसके साथ साथ हम लोग एक स्पेशल चिकन करी भी बना के इनको देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कोकोनट राइस होम स्टाइल में अपने अंदाज में कैसे बनाते हैं, देखते हैं।
अब हम लोग मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कोकोनट राइस बनाने के लिए बाउल रखे हैं, उसी पे हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। राइस में अच्छे से फ्लेवर के लिए हम लोग इसमें प्योर घी भी डालेंगे। इसी घी में हम लोग रॉ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स। इन स्पाइसेस के बाद हम लोग इसमें तड़का सीड्स भी ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें चॉप्ड जिंजर भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी डालेंगे। इसका मज़ा और भी डबल करने के लिए हम लोग इसमें कैश्यू नट्स भी ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें करी लीव्स भी ऐड करेंगे। फाइनली हम लोग इसमें ड्राई रेड चिल्ली भी डालेंगे। इसी वक्त हम लोग इसमें पहले ही जो निकाल के रखे थे कोकोनट पाउडर, उसी पाउडर को इसमें डालेंगे। इसी मिक्सचर में हम लोग बॉइल्ड राइस ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोकोनट राइस परफेक्टली बन गया है। नेक्स्ट इसके साथ साथ हम लोग बच्चों को चिकन करी भी देने वाले हैं। चलिए इमीडिएटली चिकन करी प्रिपेयर करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
जो भी ये वीडियो देख चुके हैं एक शेयर करिए, उसके वजह से और भी बच्चे फ़ायदेमंद हो सकते हैं और पेट भर खाना भी खा सकते हैं। जी हाँ, और ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे Nawabs_kitchen 786 पे फॉलो करिए और हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए। हम लोग आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।